Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is heart sounds. ठीक है, हार्ट साउंड्स क्या होते हैं? जो साउंड हार्ट हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो बीट करता है तो वो साउंड्स हार्ट साउंड्स है और वो साउंड्स हमें ऑडिबल होते हैं. कैसे? वो हार्ट साउंड्स हमें कब ऑडिबल होते हैं? व्हेन वी यूज स्टेथोस्कोप्स यूज करके हम अगर सुनते हैं किसी के हार्ट साउंड्स तो हमें वो ऑडिबल होते हैं. तो वो हार्ट साउंड्स है. देयर आर 4 हार्ट साउंड्स जिसमें भी फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड ऑडिबल होते, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड ऑडिबल नहीं होते. ठीक है. First, second heart sounds we can hear with the use of stethoscope, but second and third heart sounds we cannot hear in normal conditions. मतलब कि अगर थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड्स हमें सुनाई दे रहे हैं, that means there is some pathology going inside. Okay, there is something not normal inside. The first sound S1, sound 1, can be described as, normally we say that the first heart sound S1 can be described as love, means that is the first heart sound is, we say that the first heart sound is love sound, which is louder and bit longer than the second heart sound. जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लाउडर है और लॉन्गर है देन सेकेंड हार्ट साउंड. फर्स्ट हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बंद होते हैं. अब हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कब बंद होते हैं? इमेजिन कि हमारा हार्ट है, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल. जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बंद हो जाते हैं, बोथ राइट एंड लेफ्ट. ओके, दैट टाइम अ फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस. अब वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्यों बंद होते हैं? वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्शन करने वाले. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड का बैक फ्लो वेंट्रिकल से एंड एट्रियम में ना जाए, इस वजह से वो एवी वेल्व जो होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व वो बंद हो जाते हैं. दैट टाइम फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड. The second sound S2 can be described as a dub sound, which is shorter and less louder than the first sound. This is caused by closure of semilunar valve before ventricular diastole. Now what is happening here is ventricle are going to relax now. Ventricle ने contract करा, ठीक है, उसने ब्लड पंप आउट बाहर कर दिया. अब वेंट्रिकल से बाहर चले गए कहाँ? लंग्स में और सिस्टम के सर्कुलेशन में. तो जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो जो सेमिलुनार वेल्व है, जो वेल्व हमारे एओर्टिक वेल्व है और पल्मोनरी वेल्व है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के में लगे और एओर्टा में लगे हैं, वो बंद हो जाते. क्यों? अभी वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, ब्लड ऊपर गया है, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, नेगेटिव प्रेशर बनेगा तो ब्लड का बैक फ्लो वेंट्रिकल में नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई दैट दोज वेल्व्स आर गेटिंग क्लोज्ड. तो वेल्व्स बंद हो रहे हैं, इसलिए सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है. नहीं, नाउ इट इज क्लियर व्हेन द फर्स्ट हार्ट साउंड इज हर्ड एंड व्हेन द सेकेंड हार्ट साउंड इज हर्ड. S4 is the sound of blood turbulence during atrial systole. Now what is turbulence? The blood is rushing during atrial systole. Means when the atria, the upper part of the heart are contracting, the upper chamber of the heart is contracting, that time the blood is rushing down in the ventricles. So that sound of blood while it rushes down, that turbulence of the blood when it rushes down from the atrium to the ventricle creates a sound, and that is the fourth heart sound. S3 is the sound of blood turbulence during ventricular filling. Now when the ventricles are getting filled, that time one sound is produced as S3. Now I will put one clip
where you will understand more clearly how these heart sounds are being produced, how the valves are getting closed, how the contraction of atria and ventricles are taking place. Okay, so put your earplugs in and listen to the heart sound. And if you have any doubt, after that also if you are having any doubt, feel free and ask in the comment box. I will definitely clear them all.